Attention, students of ICSE Class 9 and 10 and Intermediate First Year. Do subscribe to Study with Sudhir YouTube channel where we cover English literature, history, civics, geography, biology and English grammar and many important motivational videos too. Don't forget to click on the bell icon so that you can get regular updates. Hello and welcome to Study with Sudhir, your digital classroom. I'm TS Sudhir and today we are going to be looking at Geography, ICSE Class 10 syllabus and a chapter called the Soils in India. A lot of students have requested for it and I'm going to be doing it in two parts primarily because it has a lot of material that you need to remember, and remember means rote learning, or you can make codes to remember it, as I have been telling some of the students the ways to do it. So we're going to be doing it in two parts. The first part in which we'll deal with the soils in India and the second part in which we'll talk about soil erosion and soil conservation. In a part 3 which I'll do later, I'll also give you specific questions from this chapter which you need to prepare, because in geography each chapter is actually 10 marks. So if you do it well, your 10 marks are in the kitty, and that has to be the attitude, more so in geography but also in other subjects. So in fact I would be looking through in February to look at every chapter and give you questions so that you are prepared chapter wise and not just say world history in general, Indian history in general, which I have done in the past, so that it gives you an idea, it gives you a sense of how a particular chunk in history needs to be looked at. Okay, तो शुरुआत करते हैं soils का हिंदी में अनुवाद करें तो उसका अर्थ निकलता है मिट्टी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. Now this song is from much ahead of even my time, okay, but it still remains one of the most popular songs in Hindi cinema, which kind of conveys the richness and the variety of soils that you find in our country. So let's get started with soils in India. Now, what is the definition of soil? That you need to know straight away. Now, soil is obviously an important natural resource that covers most of Earth's land surface and on which life directly and indirectly depends upon, because the food that we consume is grown on the soil of India. Okay, so soil, the formation of soil actually is a rather long drawn out process, but the destruction happens quite easily. So it's imperative, it's important कि हम इस देश की मिट्टी की एक तरह से हिफाजत करें, एक तरह से सुरक्षा करें, in order so that it can continue to support life in India. Now, how does soil get formed? That's the second part. Now, the process of soil formation is called pedogenesis. You need to remember this word. Pedogenesis is the word which basically talks about the process of the formation of soil. Now, it obviously depends on both environmental factors, and that includes climatic conditions, the weather conditions, also the weathering of rocks, erosion of rocks as well as soil, and living things such as plants and animals, and finally the surface relief and the entire drainage that takes place. So a whole lot of factors actually come together in order to decide, and that plays an important role in deciding कि उस particular region की, उस देश की, उस शहर की, उस गांव की मिट्टी कैसी होगी. Okay, so it does not depend only on one factor but various factors, from climatic conditions to drainage to plant and animal life. Everything kind of comes together in order to play a role in the formation of that particular form of soil, which is why the soil that you find in, say, Anantapur in southern Andhra Pradesh is very different from the soil that you would find in Kanpur, near Kanpur in Uttar Pradesh. Okay, so even though we are in the same country, the soil quality is very, very different, and that plays a role in the kind of crops that are grown in that specific region as well. Now, what are the different constituents of the soil? Soil में क्या क्या होता है? Now, soil is basically the loose material which forms the upper layers of the surface and is developed from it. Okay, this is the definition which you would need to remember. It consists of fine particles, because मिट्टी को अगर आप निकाल के देखें, रेत को नहीं, मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हॉलिडे की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप
किसी गांव में जाते हैं या शहर में भी कहीं लूज मिट्टी होगी, आप उसको निकाल के देखेंगे, बेसिकली इट्स लूज mud, particles of mud. It consists of fine particles with no definite or constant composition. तो उसमें क्या होगा, उसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होता है, शहर में हो या गांव में हो, it doesn't have any specific character unless you go specifically to the field. अगर आप ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि आंध्र प्रदेश में, गुंटूर में, तेलंगाना के कुछ इलाकों में, कर्नाटका के कुछ इलाकों में मिलता है, तो दैट इज a little more, almost like lumps. You can feel it's उसका एक वजन रहता है, it's almost very different in texture. वहीं अगर आप जिस पे कि crops like cotton etc are grown, it's good for cotton. It's also known as black cotton soil in many parts. Whereas अगर आप southern कर्नाटका में जाएं जहां पर sugar cane उगाया जाता है, वहां की जो मिट्टी है वो कुछ अलग किस्म की होगी. So different these things, if you kind of have a feel for that kind of mud, you'll be able to realize कि अलग अलग राज्य की, अलग अलग प्रदेश की और अलग अलग राज्य में भी अलग अलग इलाकों की मिट्टी अलग अलग होती है. बेसिकली देयर आर वेरिंग प्रोपोर्शंस ऑफ सिलिका, clay is very important, chalk which is essentially calcium carbonate, and humus again very important. Clay and humus being most important of these four parts: silica, clay, chalk and humus. SCCH. Okay. You just have to make up different kind of codes in order to remember a lot of these things, because it's a lot of information that you need to store out here. Okay, and which have been formed by the decomposition of plant remains, animal manures and dead animals. Cattle मर जाता है, उसको bury नहीं किया जाता है. It over a period of time with water, rainfall, heat, everything, wind, it kind of gets subsumed in the soil itself. And it's an essential element in determining the फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कि उसमें कितनी उपजाऊ भूमि है उसके ऊपर उसको भी एक तरह से डिटरमिन करता है. जिस तरह का जो सॉइल फॉर्मेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ सिलिका, क्ले, चॉक एंड ह्यूमस की वजह से, एंड डेड एनिमल्स, प्लांट रिमेन्स, वेदर कंडीशंस, एवरीथिंग मिला के. ओके, नाउ व्हाट इज द सॉइल प्रोफाइल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? नाउ सॉइल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर लेयर्स, टॉप सॉइल एंड सबसॉइल. Okay, what we see essentially is the topsoil. Unless you have gone somewhere into rural areas, seen the digging of say something like a bore well, या किसी का पूरा कृषि का देखा है जबकि पूरे भूमि को एक तरह से ओवरटर्न किया जाता है. अगर नॉर्मली क्या होता है, since I have covered agriculture a lot in southern India, when after one crop, two crops, or after 2-3 years, many farmers what they do is to overturn the entire soil so that जो नीचे की जो more fertile soil hai, that comes on top, so that the whole nutrients get mixed up very well. So they, with the help of tractors and other implements, they overturn the entire soil, both the top soil as well as the subsoil. Otherwise you see only the top soil, generally speaking. The top soil is the most important layer of the soil since it contains humus. It contains all kinds of bacteria, worms, insects and decayed plant life. Okay. It takes years to form the topsoil, but it gets washed easily because of heavy rainfall, flooding के time पे soil erosion हो जाता है, तो topsoil goes away, and the going away of the topsoil is not considered very healthy for the environment, for agriculture, for general fertility of the soil, because it is a topsoil which contains the insects, which has its own uses, worms, then you have humus, bacteria and decayed plant life. So the topsoil is extremely critical. Subsoil का क्या बात है? Subsoil is obviously the layer below the topsoil, consisting of parent material which are further reduced to form soil. It also contains moisture. Moisture again which plays a very important role in agriculture and deciding which kind of crops can be grown in which region. And mineral constituents but no humus. So humus is found in the topsoil but not in the subsoil. Subsoils mein you have moisture, you have mineral constituents, and below this is the layer of solid rock material. So जो नीचे का तय है, that is entirely of hard rock in most places. Sometimes in many places the subsoil is also very less and it is a rocky formation, especially in the peninsular region, Deccan Plateau, Hyderabad, Telangana ka kafi regions mein, it is a lot of the rocky formations which are actually form the major part of the earth surface out here. Now we come to, and this is important, the different types of soils which are formed in India, and essentially there are 6 forms of soils which are formed in India. Alluvial soil, largely in the northern belt, black soil, जिसका कि मैंने अभी जिक्र भी किया, red soil, laterite soil, desert soil and mountain soil.
अभी इसमें मैक्सिमम जो पहले 4 हैं उन्हीं की हम बात करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडिया हैज दीज 4 काइंड्स ऑफ सॉइल, दैट इज एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लैटराइट सॉइल. Desert soil and mountain soil, not really so much. Let's first come to alluvial soil. Please keep listening to it, also trying to remember it, and immediately after you have gone through this video lesson, ensure that you go through the textbook so that आपको एक तरह से फिर से memorize हो जाए. The textbook that I am following is by Frank Brothers. You could be having any other textbook. 19-20 का फर्क होगा basically text में, but you need to read the chapter again so that it kind of gets retained in memory, because a lot of geography, fortunately or unfortunately, is to do with memory retention. Okay, बादाम खाओ. कल का जो मैंने डाइट वाला चैप्टर डाला था वो भी पढ़ो. Alluvial soils are of 2 types. Okay, deltaic coastal and inland alluvium. Okay, alluvium क्या है? Alluvium का जो definition क्या है? Alluvium is basically a deposit of clay, silt क्या होता है? जो नदी के नीचे का जो तय होती है surface, that is essentially silt formation हो जाता है. Sand, okay, यानी कि रेत, left behind by flowing flood water and in a river valley or delta. तो जब बाढ़ आती है नदी में तो जो बहते पानी की वजह से what is left behind, which is a combination of sand, clay and silt, okay, or delta, and it produces, and this is known as extremely fertile soil. So this soil is very fertile and obviously very good for agriculture. Okay, कृषि के लिए काफी important है ये. These soils, जब मैं महत्वपूर्ण जैसा शब्द यूज करता हूं तो कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि मैं बहुत ही कठिन हिंदी के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं. महत्वपूर्ण कहां से इतना कठिन हो गया? ये तो उत्तर भारत में सभी विद्यार्थियों को जानकारी होनी चाहिए महत्वपूर्ण जैसे वेरी साधारण शब्द के बारे में. These soils have been transported by the rivers, जैसे मैंने अभी कहा. They are thus called ex situ. EXSITU. So you need to know what is ex situ. Ex situ is essentially soils which have been transported as a result of the rivers, especially in the times of flooding of rivers. They represent the riverine residuum alluvium brought down by the Indian rivers. Okay, तो alluvial soil का जो definition जो मैंने बताया and ex situ, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. If they just ask what kind of soil is alluvial soil, तो आपको ये definition से ही शुरुआत करनी पड़ेगी. अब कहां पाया जाता है alluvial soil? बेसिकली इंडस नदी जो है उसके जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं विच फ्लो इन इंडिया लाइक झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज, जो पूरे पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एरिया में है. देन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द मेन पार्ट हैं, विच आर ए फ्यू ऑफ विच लाइक यमुना हो, गोमती हो, गंडक हो, घाघरा हो, कोसी नदी हो जो बिहार में बहती है, हर साल बाढ़ आती है उसमें. ओके, द ब्रह्मपुत्र, अगेन एवरी ईयर इट फ्लड्स आसाम, बट the positive of that is that it actually contributes to the alluvial soil, which helps in the agriculture and the general fertility of the soil. Then fourth is our rivers like Narmada, central India, Tapi, Godavari and Krishna. Godavari and Krishna flowing from Maharashtra downwards into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh. Okay, and deltas of which they are darker because the alluvium soil is mixed with rigorous soil, especially in South India and to a large extent also in Maharashtra. Maharashtra में भी कपास की उगाई होती है काफ़ी ज़्यादा. Cotton is grown a lot basically in Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, to an extent in Karnataka and Tamil Nadu also. Now the distribution is mainly North India, Punjab, Haryana, UP, Bihar, West Bengal, Orissa, Gujarat, Rajasthan, Assam, the Brahmaputra Valley and the peninsular India. Now, what are the characteristics and the composition of this alluvial soil? Mainly found to a depth of 500 meters, 500 मीटर तक alluvial soil रहता है. It's yellow in color, rich in potash, humus and lime. Potash, humus and lime. आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है बाबू. Deficient in nitrogen, tends to be phosphoric. This is important that the alluvial soil has more of phosphorus, but it is deficient in nitrogen. Okay, varies greatly in texture from coarse to fine. तो थोड़ा रफ भी रहता है और काफी फाइन भी रहता है. It can actually goes the entire 180 degrees. Now the 6th, 7th and 8th points are important. 6th point is Bhangar. Bhangar क्या है? It is the old alluvium found about 30 meters above sea level in river terraces, light grey in color and calcareous clay. It is less fertile. Okay, so and it is also porous.
ओके तो भंगर के बारे में कभी कभी सिर्फ भंगर के बारे में भी प्रश्न आता है. सो इट इज पोरस ओल्ड एलुवियम फाउंड अबाउट 30 meters above the sea level in river terraces, light green color and calcareous gray. Khadar, which is another thing which is asked, is the newer alluvium found in the deltas and in the lower beds of the plain through which the river meanders. It is non-porous, clay, that means थोड़ा सा और thick रहता है, and loamy. It is replenished by flood. So आपको खद्दर और भंगर में अंतर मालूम होना चाहिए. जो डेक्कन का जो कोस्टल स्ट्रिप है, यानी कि आंध्र प्रदेश हो, those kind of states, the soil is non-porous, gets darker as the rivers flows over the black rigger soil. जो मैंने बात की गुंटूर जैसे इलाकों में पाया जाता है, and some of which they carry away. So खद्दर और भंगर के बीच में आपको मालूम होना चाहिए. एंड खद्दर इज मोर फर्टाइल. आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाई इज खद्दर प्रिफर्ड टू भंगर सॉइल. ओके, देन यू हैव टू राइट बोथ आर एलुवियल सॉइल्स, और उन दोनों के बीच में फर्क बताने के लिए आपको उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी होगी. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. इनमें क्या क्या किस तरह की कृषि की जाती है उसके बारे में भी बात करते हैं. तो इट इज सूटेबल फॉर बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, जो दो सीजन्स है एग्रीकल्चरल सीजन्स इन इंडिया, और कॉटन, सीरियल्स, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन, इन सब की उगाई होती है. द लोअर गंगा ब्रह्मपुत्र वैली इज यूज्ड फॉर जूट कल्टिवेशन. So jute, cereals, sugarcane, cotton. These are the 4 crops that you can mention. Now let's come to the black cotton soil or the rigger soil, which is also quite a lot in the entire country. Now black cotton soil or rigger soil is of volcanic origin, lava soil formed due to disintegration of basalt. हर सॉइल किस वजह से फॉर्म होता है उसके बारे में आपको याद रखना जरूरी है. इसको थोड़ा रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा मगअप करने की जरूरत होगी, बट ये आपको करना पड़ेगा. मेरी आपसे गुजारिश ये है, मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि अगर आप इसके जो मेन वर्ड्स है आप इसको लिख लिख के याद कर लेंगे, 2 बारी 3 बारी लिखेंगे तो दिमाग में रहेगा. इट काइंड ऑफ स्टेज बेटर इन मेमोरी इज माई ओन फीलिंग. ऑल्सो इट हेल्प्स यू in improving your handwriting, which also seems to be quite a concern with many students. It is also known as black cotton soil because cotton thrives well on it. So black cotton soil or rigger soil. Black soil has been formed in situ. वो ex situ है, ये in situ है. That is found in the area where it has been formed. वो ex situ है because it is kind of also formed by flood water. So actually the soil moves from area to area also. Whereas this is in situ. Distribution, basically as I said, the Deccan Trap, which is Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, okay, also some parts of Gujarat and Madhya Pradesh, and that's where the black cotton soil is formed. Characteristics and composition, deep, fine-grained and varying in color from black to chestnut brown. So it's in a very dark kind of a color is what black cotton soil, as the name indicates. Rich in iron, potash, lime, calcium, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स एंड ह्यूमस. तो इसका एक कोड है लिम्प CaH. तो लिम्प CaH आप याद रखिए और देन यू ट्राई टू एक्सपैंड इट. लाइम, आयरन, पोटैश, कैल्शियम, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स एंड ह्यूमस. तो अगर आप कोड रख के आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे, इट जस्ट मेक्स इट ए लिटिल easier, you know, limp CaH हो सकता है या HAC कर सकते हैं या ACH कर सकते हैं, whichever you kind of find it easier. It just makes life a little easier. Moisture retentive, very important, moisture retentive and very sticky when wet. जब उसमें पानी मिलाया जाता है, the whole thing forms very very sticky. उसको उठाएं तो you know you feel the weight and it's also very very sticky. It's not something with which you feel as though कि roots काफी अंदर से porous होते हैं. It's not like very dry kind of soil. When dry, hardens and forms deep cracks, which is why during the summer season the same black cotton soil के आपको photographs मिलेंगे पेपर न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे. देखो कितना सूखा पड़ा है, और पूरा क्रैक्स वाले जो फोटोग्राफ्स तस्वीरें आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं वो ज्यादातर एलुवियल सॉइल के नहीं रहते हैं, वो ज्यादातर ब्लैक कॉटन सॉइल या रिगर सॉइल के रहते हैं, जहां पर क्रैक्स ज्यादा आसानी से फॉर्म होता है. किस तरह के क्रॉप्स होते हैं? कॉटन की तो हमने बात की, जवार, वीट, शुगर केन, ग्राम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब हम आते हैं लाल मिट्टी पर, रेड सॉइल पर. रेड सॉइल इज फाउंड बाय द वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलीन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड हैज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड. ओके, क्ले और रेत से मिलाकर ये रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और ये ज्यादातर तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में रेड सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड. इनफैक्ट उड़ीसा इज क्वाइट अ लॉट, इवन छत्तीसगढ़, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी मिनरल रिच.
एंड इसकी बेसिक खासियत यही है, इसीलिए ज़्यादातर मिनरल एक्सप्लोरेशन किया जाता है. कंपनीज लाइक वेदांता एटसेट्रा आर देयर इन ओडिशा. Chhattisgarh is also a mine rich area. Jharkhand is another mine rich area. So basically red soil is prevalent there. That's what really adds to it, because it's red in color. Why? Because it is high iron oxide. Iron oxide content is very high in this red soil, and the color varies from chocolate brown to yellow. Okay, alluvial soil का भी हमने देखा कि कलर येलो है, लेकिन इसमें रेड सॉइल में द कलर वेरीज फ्रॉम चॉकलेट ब्राउन टू येलो, and it is deficient in nitrogen and lime, phosphoric acid and humus. But when fertilizers are added, soil becomes agriculturally very productive if you add the right kind of fertilizers. Rich in potash, so it's rich in potash but deficient in nitrogen, phosphoric acid and humus and lime. Porous, friable but not retentive of moisture. Okay, तो इसकी जो basic जो characteristics है, इसको आपको याद करने की जरूरत तो पड़ेगी. किस किस तरह के crops उगाए जाते हैं? Wheat, rice, millets, cotton, sugar cane, pulses. Okay, but it needs both irrigation. तो रेन फेड एरियाज में रेड सॉइल का होना ये नहीं है, बिकॉज अगर आपने कभी छत्तीसगढ़ में ट्रैवल किया है, मैंने छत्तीसगढ़ में काफ़ी ट्रैवल किया है क्योंकि एज पार्ट ऑफ माई जॉब, बिकॉज दैट्स वेयर नक्सलिज्म इज वाइडली प्रेवलेंट, सो यू फाइंड इट्स प्रीटी ड्राई इन इट्स एंटायर रीजन, स्पेशली द बस्तर रीजन वेयर यू नो द माओइस्ट्स आर मोर एक्टिव. तो अगर उसमें वहां पर कृषि करनी है तो आपको वहां पर एक तो इरिगेशन की, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, और जो हमने वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में भी पढ़ा है, और फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत पड़ती है इस रेड सॉइल में, बिकॉज रेड सॉइल इज एसेंशियली लो इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, द टिपिकल फर्टिलाइजर्स, बट इट्स हाई इन आयरन ऑक्साइड. लास्ट हम आते हैं लैटराइट सॉइल पर. लैटराइट सॉइल इज फाउंड बाय लीचिंग ऑफ लैटराइटिक रॉक्स. ओके, ये थोड़ा अलग है. Lateritic rocks under high temperature and heavy rainfall with alternating dry and wet periods. Leaching of lime and silica leaves behind a poor soil which is unsuitable for cultivation. It is often used for building purposes. So वहाँ की जो मिट्टी है उसका इस्तेमाल किया जाता है for कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, जो हमारे शहरों में या गांवों में या टाउन्स और सिटीज वगैरह में जिस तरह का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसमें ज़्यादातर लैटराइट सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कृषि करना काफ़ी नामुमकिन माना जाता है. ओके, एंड इट इज़ फाउंड बाय लीचिंग ऑफ लैटराइटिक रॉक्स. जो रॉक्स का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे काइंड ऑफ go down either by heavy rainfall or under high temperature, they kind of weather away, and that is what is forming the laterite soil. Iska distribution again, it is there in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Orissa, Karnataka. Okay, Malwa Plateau, Goa and Kerala. The characteristics, it is red in color and a high content of iron oxide. So both laterite soil and red soil have a high content of iron oxide. Both are, it's also poor in nitrogen just like alluvial soil or red soil, but it is rich in iron. It is coarse and in texture, and its high content of acidity and inability to retain moisture. Crops कौन से रहते हैं? इसमें ज़्यादा उगाई नहीं होती है, लेकिन the only two crops that seem to grow on it is cashew and tapioca. Cashew यानी कि काजू और tapioca. It is unsuitable for growing any other cereals or pulses. ओके, तो आपको ये याद करने की जरूरत है, जो मैप्स में दिया गया है, मैप मार्किंग में भी ये काफी काम आता है. ये जो पूरी जानकारी है, तो इस चैप्टर पर आपको ध्यान देना जरूरी है. इस पार्ट को, जो पहला भाग हमने जो अभी किया है, क्योंकि मैप मार्किंग में रेड सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, येलो एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, ये आमतौर पर आपके मैप मार्किंग में ये प्रश्न जरूर आता है. तो नॉट जस्ट फॉर मैप, फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, बट ऑल्सो फॉर मैप मार्किंग, ये जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए काफी जरूरी मानी जाएगी. ओके, मैं थोड़े से प्रश्न जल्दी से देख लेता हूं कि किस तरह के आते हैं. जैसे मैंने कहा, खद्दर सॉइल्स आर प्रिफर्ड टू बंगार सॉइल, ऐसा क्यों? ये ICSE 2012 में आया था. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये 2013 में ये प्रश्न आया था. ओके, वाई इज लैटराइट सॉइल अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो हमने अभी भी बात की, ये 2013 में ये प्रश्न आया था. तो आप देख लीजिए, जो अभी हम पढ़ा है, इसको आप याद रखेंगे, समझ लेंगे, आप समझ चुके हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं. बट इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल and remember it, retaining in memory is really the challenge. So if you are able to do that, you will be able to do it well. Disadvantages of red soil, that has come in the ICSE papers. Then
This is in the second part, and what is laterite soil has come quite a few times. Then name the soil which is formed due to high temperature and heavy rainfall with alternating wet and dry periods. Name 2 states where this type of soil is found. ये भी 2009 में आया था, ऑलमोस्ट 11 साल पहले. तो यहाँ पे अभी हमने बात की लैटराइट सॉइल की. तो इस तरह के प्रश्न आते हैं. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल, उसके बारे में आया है. नेम द सॉइल विच इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कैश्यू नट्स, अभी मैंने बताया 2014 के ICSE के पेपर में आया था. सो दिस इज द थिंग. सो द क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक. मेरा ये क्वेश्चंस को मेंशन करने का बेसिक आइडिया यही है कि द क्वेश्चंस आर ऑल वेरी बेसिक. ऑल द चैलेंज इज रियली in being able to retain it. So मुझे उम्मीद है कि because I've kind of simplified it a lot, and if you read the chapter a couple of times, you will be able to retain it, but keep revising it every 2-3 days so that it keeps going into your mind, and you can almost make it into a quiz competition. Ask your brother or sister or your father or mother or your grandfather or grandmother just to ask you questions and see whether you are able to answer it. Make it almost into a fun quiz kind of a situation. मजा भी आएगा, याद भी हो जाएगा. Okay, thank you very much. I'll meet you in part 2 in which we are going to talk about soil erosion and soil conservation. Okay, so do tune in so that this entire chapter gets covered in a comprehensive manner and the 10 marks are in your pocket. Thank you very much for watching and subscribe किया है नहीं, subscribe कर देना. Okay, bye.